चलो ऑल राइट टिके मु आज ब्रीफ मु आज बेसी समय नेबिनी मु जानि छी आपन समय बहुत क्रुशियल मु खाली आज टी ओवरव्यू करी डिस्कशन करिवि सो दैट आपन अधिक रु अधिक समय सेल्फ स्टडी से आपन फोकस कर परिबे ओके मु मोर स्क्रीन टा को शेयर करछि हमर जो एसे हेतिला एसे पेपर टा मु टिके ब्रीफ डिस्कस करूछि पूर्व थर एसे मु आपन समस्त सहित कथा हेतिली एई थर को एसे टिके अलगा टाइप रे पडिछि आ मु चेष्टा करिछि सेही एसे गुडा पकेया पे जो गुडा आपनकर प्रोबेबल मु कहिबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो ओके वर्तमान स्टूडेंट्स आई थिंक आपनकर लेटेस्ट भी गोटे एसे एग्जाम आई थिंक हेछि जोटा कि टेस्ट नंबर 28 सेथरे भी किछि नुवा नुवा सब क्वेश्चन अछि जोटा कि मु कहिबी रिलेवेंट क्वेश्चन फर्स्ट जिंस स्टूडेंट्स कि एसे देखंतु G20 इंडिया G20 इंडिया एंड मल्टीलैटरलिज्म एटा गोटे गोटे हाईली प्रोबेबल आ गोटे एसे देखंतु पूर्व क्लास रे मु गोटे एसे पचारथली कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी मन थिबो पूर्व एसे रे पचारथली कि स्पोर्ट्स आ इकोनॉमी भितरे कोन एई क्लास रे मु कोन पचारछि एई एसे रे मु पचारछि कि स्पोर्ट्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लार्जर सोशल फेनोमेनन दिटी जाक अलगा को ओके सेटा स्पोर्ट्स इकोनॉमी को केमती लिंक अछि एटा सोशल फेनोमेनन को केमती स्पोर्ट्स लिंक अछि बिकॉज़ काहे कि मैंने पचाउछि बिकॉज़ हमरो ओडिसा आपण जानिछन्ती हॉकी रिसेंटली फिफा जाईछि क्रिकेट वर्ल्ड कप हेछि तो स्पोर्ट्स बहुत सारा डेवलपमेंट हमरो चलीछि एबे रिसेंटली भी मु कहिबि आई थिंक ऑलरेडी आपण को मेंस रो क्वेश्चन पेपर तो रेडी ऑलरेडी हेइ साथिबो प्रिंटिंग को मोस्ट प्रोबब्ली जाईथिबो नेक्स्ट होछि इकोनॉमिक्स एटा होछि गोटे फिलोसॉफिकल एसे इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स इज caricature and ethics without economics is a fairy tale next होछि इंडिया एट 75 years and beyond माने हमर भारत रो स्वाधीनता 75 वर्ष पूरा हेछि तो ता विषय लेखिया पे एसे नेक्स्ट होछि हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ओन्ड बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग ए जो दीटा क्वेश्चन ये होछि आपनकर यूपीएससी रो सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रु मु एटा पकै छी म आपन कहि दउ छी जिंसटा ओके रीजन बहुत सिंपल केना बहुत थोड़ा में देखि जे ओपीएससी भी से वाला माने डायरेक्टली सेटा पकाए कि टिकेट ट्विस्ट करी पकाए बट एटलीस्ट आपण एई विषय गुलो जानि थिबे सो टिकेट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करबा G20 इंडिया एंड मल्टीलैटरलिज्म मु आपण मानको आगुरो भी कहितली कि केते वर्ड्स लिखिबे 1900 वर्ड्स प्लस और माइनस 200 आपण वर्ड्स आपण करि पारि माने पाखा बाकी 1700 1800 नै कि 2100 2200 पर्यंत आपण लिखि पारिबे गोटे गोटे से आपण 200 मार्क्स पाइ ओके नाउ G20 इंडिया एंड मल्टीलैटरलिज्म अगेन मु कहूची मॉडल आंसर समस्त को मिल जाई छी ग्रुप रे यस सर समस्त पाइथिबे मॉडल आंसर ओके तो मॉडल आंसर टा आपण देखि नेबे भलो भाबरे मु डिटेल लाइन बाय लाइन तो पढिबिनी बिकॉज़ आज सेति समय भी नाही मु आपण को समय भी नष्ट करिया पे चाहुनी निजे आपण डिटेल से पढि परिबे मॉडल आंसर रे खाली टिके मु ओवरव्यू दे दोची कि ए वाला टॉपिक गुडा को हम केमिति कोन प्रिपेयर करि परियो केमिति लिखि परियो So G20 India and multilateralism बहुत गुटे हॉट टॉपिक फॉर बोथ जीएस हो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो एसए हो ए वाला टॉपिक हमर आसीबार संभावना अछि तो हमें केमती देखिबा स्टार्टिंग हमें केमती करिबा स्टार्टिंग हमें ब्रीफ दबा कि G20 हमरो एई समय रे व्हाई इट इज सो क्रूशियल तो हाउ टू बिगिन द आंसर एई भला दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस तो या पई देखंतु या पई मु कहिबी जे गोटे कॉन्टेक्स्ट किमा गोटे एग्जांपल दे कि हम स्टार्ट करि परिबनी हमको डायरेक्टली स्टार्ट करिया पड़िबो ओके नाउ डायरेक्टली हम केमती स्टार्ट करिबा कि इंडिया एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी ऑन 1st of December at a critical juncture at a global affairs keyword global affairs kahe ki global affairs कि the presidency provides India with an opportunity to steer one of the more effective multilateral forums for global governance. India's presidency is a momentous for several reasons. Critical challenges confronting humanity today are global in character, not confined by the national boundaries and require collective actions. Okay, it was a बहुत interesting statement. Now, kahingi is inside crucial because COVID-19 pandemic inability to avoid Russia-Ukraine war has further accentuated the fault lines keyword fault lines in multilateralism. Students गोटे जिनस मन रखु एसए रे सब मन रखिए जिते आप एसए हो कि जीएस हो जहाँ भी आप लिखु ये जो कीवर्ड कौन कीवर्ड कही G20 विषय लिख इंडिया ए मल्टीलैटरलिज्म तो आपण आंसर रे ए तीनटा कीवर्ड सब रहा ही पड़ो ओके एंड खाली तो रहिला हबने लिंक करिवे G20 इंडिया लिंक केमती इंडिया विथ मल्टीलैटरलिज्म लिंक केमती रहइबो तो एठी मु कोन लिखिली कि द
failure to cope with the COVID-19 pandemic and the inability to avoid the Russia-Ukraine war has further accentuated the fault lines in multilateralism. So India ର ଗୋଟେ India's presidency, India जो presidency କରୁଛି is an opportunity to revive the multilateralism. जो multilateralism ଗୋଟେ is an international relations phenomenon, ତାକୁ revive କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ opportunity. At the same time ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇଆ ବି ଗୋଟେ opportunity କି जो global governance decades of action जोटा कि ଆମେ କହିବା sustainable development goals को କେମିତି ଆମେ achieve କରିବା ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭାରତ ଆଗୁଆ କରିପାରିବ. ଓକେ, ନାଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଦେଇଛି କି ଆମେ ଇଜ ଅ ଲିଡିଂ ପାୱାର, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ. ଦେନ୍ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କଣ କି ଆମର ଭାରତର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି G20 ର ଥିମ୍ କଣ, ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପୁରା ଆମର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି. जोटा कि G20 रो लोगो विषय आपण टिके लिखले लोटस लाइक दैट इंडिया's ruling Indian Prime Minister Narendra Modi noted that the world is currently experiencing conflict, after effects of once in a century pandemic and economical uncertainty. ए जिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी कहिसंती. ओके, आउ कोन कोन जिंस हम टिके देखिबा कि साधारणतः मु कहिबी कि इंडिया विषय लेखिया पड़ियो G20 सहित से कोन कोन करि परिबो. फॉर एग्जांपल एठी India is keen to address at seas world's pressing issues. कौन कौन pressing issues देखिवा, climate change, food security, healthcare, technology, etc. Okay, तो ये होची these are the issues going on. तापर हम एटी टिके लेखा है कि चाइना रो टिके डायरेक्शन काने मल्टीलैटरलिज्म जेहेतु अछि, चाइना रो टिके डायरेक्शन सेठी दिया हेची कि टेंस कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना, जोटा कि हमें साधारणतः कहि परिबा कि हम कोल्ड वार 1.0 एंड 2.0. ओके, कोल्ड वार 1.0 यूएस चाइना, सॉरी कोल्ड वार 1.0 होची यूएसएसआर यूएसए, कोल्ड वार 2.0 होची यूएसए एंड चाइना, कोल्ड वार 3.0 होची आपनकर रशिया आउ यूएसए. ओके, ए जिंस गुडा मन रखे 1.0 2.0 3.0 ए भला क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि, माने जीएस कथा को कहजो एसए न. तो ता विषय टिके लिखिबे. एंड फाइनली आपनको आउ टिके डिटेल्स करिया पड़ियो. फॉर एग्जांपल एठी लिखा हला कि इंडिया हैज आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज कि भारत पय कोन कोन प्रायोरिटी जदि हम प्रेसिडेंसी नबा. प्रायोरिटी एया होची कि हमें को इंक्लूसिव करिया पड़ियो, इक्विटेबल दरकार, सस्टेनेबल ग्रोथ, लाइफ रो फुल फॉर्म होची कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. ओके, लाइफ रो फुल फॉर्म होची लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, tech enabled developed in health, agriculture, education, commerce, skill mapping, culture, tourism, climate financing, circular economy, global food security, energy security, green hydrogen, disaster risk reduction, resilience, development cooperations, fight against economical crimes, multilateral forums. तो देखो भेराइटीज ऑफ इश्यूज अछि, एटलिस्ट जदि एई जिंस गुडा आपनकर मन रहिबो आपण लिखि दै पारिबे. एमति किछि नहो जे नाइ लिखि परिबेनी, एइठु ही गोटे गोटे जदि पैराग्राफ लिखिबे आपनकर संपूर्ण एसए भी कंप्लीट हे जिवो. ओके, नाउ देन आपण देखंतु एठी किछि किछि जिंस फॉर एग्जांपल मु टिके कंक्लूजन को जाउची. कंक्लूजन हमें कोन लिखि परिया कि द G20 प्रेसिडेंसी प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी मूवमेंट फॉर इंडिया टू एंगेज इट्स यूथ in exploring creative solutions towards overcoming G local ର अर्थ बुझि परछन. एटा ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ में. G local ର अर्थ होची global local. Okay, this is a new word. G local, global local challenges. global local माने आपनको हमको ग्लोबल थिंकिंग किंतु लोकल एरिया रे हमको दरकार, बट एज अ टाइम ऑफ ग्लोबल थिंकिंग भी हमको करिया पड़िबो. माने कल्चर को इंटैक्ट रखिबा किंतु थिंकिंग ग्लोबल हबार अछि. ओके, that is one platform within the Y20 is one such platform within the G20 mechanism which provides an opportunity for the youth to amplify. youth को केमति हम करिबा Y20 जोटा गोटे प्लेटफॉर्म अछि, सिथरे हमें youth मन को करि परिबा. जेंति कि एरिन लायन वाटसन सी तांकर जे गोटे एसे लिखिथिले highlights how the India G20 presidency can leverage the global platform to discuss key youth issues including employment, technology, house governance, etc. All right, so students पाखा पाखे मु कहिबी जो essay टा 2000 words approximately अछि. So this is a complete answer for your G20
multilateralism as well as India এই ভଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଆଉ ପୁରା ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଥରେ ଦିଥର ଆକୁ ପଢି ନେବେ ବିକଜ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ ଜିଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏସଏ ହଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏସଏ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଟୁ एवरीवन this much Yes, sir. okay Yes, sir. चलो now ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଏସଏ ଏକ୍ସାମ ରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଉ ଇକୋନୋମି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଜ ଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଲାର୍ଜର ସୋସିଆଲ ଫେନୋମିନାଲ ଓକେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଆଉ ୟାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ କେମିତି ଆମର ଲିଙ୍କ ଥିଲା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଇକୋନୋମି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ସୋସିଆଲ କେମିତି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ has a long been recognized as more than just physical activity ତାର ମାନେ sports is not just a physical activity, it is more than that. It is a complex phenomenon deeply rooted in social, cultural, economical structures. From ancient civilization to modern societies, sports have always been a way for the people to connect and complete, to reflect the shape, the values, attitudes, beliefs on the time. In this essay, we will explore how sport is a reflection of larger social phenomenon and how it can be provided insight into cultural norms, political system, social issues. বুঝিপালে this is a very beautiful introduction. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର introduction ଅଛି simple, crisp, to the point in introduction related to sports. ଆଉ ଏଠିରେ ମୁଁ ଟିକେ personalize ବି କରିଛି ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ in this essay we will explore ଏଟା ଟିକେ personalized statement ମାନେ ତାକୁ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ नेक्स्ट हमें तारो नेक्स्ट स्टेटमेंट केमिति लिखिले कि स्पोर्ट्स हैज बिकम अ ग्लोबल सोशल फिनोमेना स्पोर्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग मेनी सोशल गोल्स सॉल्विंग अ नंबर ऑफ सोशल इश्यूज if adjusted to meet the needs okay and the sports can due to wide variety of its means and forms be taken up by the people for all the age groups from youngsters until the old age sport is a powerful driving force behind the individual actions and transformations of various social events and trends. Okay. Now, more students what जिनसो कहया पे चाहिबी एई भलिया क्वेश्चन रे आपण जो मते कहउनथले कि सर 10टा जदि मो पाहे पॉइंट अछि ताबे 5टा मने पड़छि साधारणतः एई भलिया एसे गुडा रे कोन होय कि सेति कि सफिशिएंट कंटेंट बाहर ने माइंड रो फिलोसॉफिकल एसे रे एटा गोटे प्रॉब्लम थाए किंतु स्टूडेंट्स मो गोटे कहबी कि एई जो मॉडल आंसर जदि दि तीन थर आपण खाली पढ़ी नेबे लाइन बाय लाइन खाली पढ़ी नेबे हाइलाइटर नै कि प्रिंट आउट उठे देबे जदि आपण चाहू जदि त मु कहबी जे ऑटोमेटिक कंटेंट आपण कोठ ना कोठ आपण जानि परिबे ओके नाउ now कौन कौन लिखिबा कि one of the most prominent ways in which sport reflects larger social phenomena is through its representation of cultural norms and values in many societies sport is seen as a means for promoting national identity cultural values traditions for example Olympic games which originated in the ancient Greece are now held every 4 years and bring together athletes from around the world to compete in various events. The Olympic Games have become a symbol for international unity, peace, friendship, reflecting the cultural values of the time. Buji parchandi all of you? Are you understanding? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Rest of the students? बुझी पाछनी केमिति आपण कनेक्ट करैबे कि स्पोर्ट्स आउ सोशल यूटिलिटी तार कोन अछि कि स्पोर्ट्स आउ सोशल फेनोमेनन केमिति अछि ता सहित केमिति कनेक्ट करैबे आपण निजे ही गोटे मते लागु रियलाइज करि परथि जे पूर्व स्पोर्ट्स आउ इकोनॉमी तार आंसर राइटिंग पूरा अलग थिला इकोनॉमी रिलेटेड हम बहुत किछि लिखिले आज जो आंसर राइटिंग अछि कंप्लीटली मु कहि अपोजिट कहले चले एठी मु टंका विषय हम बिल्कुल कथा हो नै हम कथा हो कि सोशल विषय ये केमिति लिंक है कि अछि तो मते लागु आपन को स्पोर्ट्स ऊपर जदी किछि क्वेश्चन आसीबो मते लागु ग्यारंटीड आपन लिखि आसीबे बिकॉज़ मु कहबी स्पोर्ट्स रो जो 360 डिग्री ऑलरेडी कवर हे गेला दीटा क्वेश्चन रे इकोनॉमी भी कवर हे गेला सोशल यूटिलिटी भी कवर हे गेला तो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स यू विल बी कॉन्फिडेंट टू राइट डाउन द आंसर ओके नाउ के आउट के ब्रीफ कहि दोची हां एटा गोटे देखंतु चैलेंजेस ऊपर कोन लिखा है ऑल्दो एठी गोटे जिंस आपण भूल करिवेनी किछि किछि स्टूडेंट्स एसे रे कोन करंती हेडिंग दे दे चलंती हेडिंग गोटा सेठी देबे अनलेस एंड अंटिल इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी अदरवाइज हेडिंग देबे इट इज नॉट रेकमेंडेड जदि एब्सोल्यूट नेसेसरी होसे देन ओनली देबे अदरवाइज अननेसेसरी हेडिंग को देबेनी केना जेतबे लिखिबे सो फ्लोटा ब्रेक हे जाय ओके एडी देखंतु चैलेंजेस कोन लिखा है
However, it is important to acknowledge the sport is not always the positive reflection of larger social dynamic. तामाने ये आमे तो पॉजिटिव पॉइंट तो हमें अच्छी बट सब बेले ये पॉजिटिव नुह यार नेगेटिव पॉइंट गुडा भी अच्छी कौन कौन जेमती फॉर एग्जांपल sports can also perpetuate harmful attitude and beliefs कौन कौन such as sexism racism homophobia बुझी पाले तमने आपण पॉजिटिव पॉइंट गुडा भी लिखिले नेगेटिव पॉइंट गुडा भी कौन कौन अच्छी लिखिले बट नॉट लाइक अ जीएस की पॉजिटिव पॉइंट्स अंडरलाइन नेगेटिव पॉइंट ना डू नॉट राइट इन दैट वे गोटे फ्लो रे ही चलिबे आपण ओके दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन द वेज इन व्हिच स्पोर्ट इज कवर्ड इन द मीडिया where athletes and events are often subject to biased and unequal treatment based on gender, race, sexual orientations. Okay, these are the challenges. Then it is crucial that we continue. Look at this is also one of the personalized way of we continue to examine, we continue to challenge, examine and challenge the ways in which sport reflect the larger social phenomena. Then sport is a complex and multifaceted reflection of a larger social phenomenon. While it has been potential to promote unity, equality, social justice, it also has the potential to perpetuate harmful attitude and beliefs. All right, এইভাবে করে কি আপনাকে টিকে ডিটেলস রে স্পোর্টস ভিতরে লেখিয়া পড়িব ইন কনক্লুজন কোন লেখা হইছি sports is powerful reflection of larger social phenomenon provides valuable insight cultural values attitude. However, it is important to acknowledge the sport is shaped by power dynamics dominant ideologies and the deeper understanding of the relations between sports and larger social phenomena requires a nuanced and interdisciplinary approach. By examining sport in its broader social and cultural context, we can gain a deeper understanding of the ways in which sports reflects and influences larger social issues, work towards creating a more inclusive and equitable sporting world. Okay, clear semester students? Language, expression is important in essay. And I'm sure that, you know, এই যেটা মডেল আনসার আপনার রেগুলার বেসিস রে আপনার পড়িবে এটলিস্ট দুই তিন থর আপনার রিভাইজ করে দিয়ন্তু অটোমেটিক সেই সব ল্যাঙ্গুয়েজ গুড়া আপনার মন ভিতরে আসিব ডোন্ট ওয়ারি अबाउट इट তা মানে স্পোর্টস র যদি মু কহিবি আপনাকে মু এতিকি কন্টেন্ট দেই দেইছি স্পোর্টস র যদি রিলেটেড কিছু भी एग्जाम রে क्वेश्चन আসিলা you will be confident to write down কন্টেন্ট র কিছু অভাব নাই আপনি শান্তিরে লিখি পারিবে ওকে নাও ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୁଁ କହି ଦଉଛି India at 75 years and beyond I think a question टा ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି हाँ it's a thought provoking question लिखिया ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ हाँ गोटे philosophical essay नबा कि history is a series of victories won by scientific man over romantic man okay केमती लिखिबे यार तात्पर्य कोन try to understand starting is romantic man is an individual who is a dreamer he has a lot of feelings idealism and imaginations a romantic man is filled with hope faith feelings a romantic man goes through with his faith he trusts in divine foresight when it comes to scientific man the quality outcomes are logic reality concentrated approach being driven by a purpose having strategy plan and clear cut procedure a scientific man tackles challenges of life with a clinical mindset a scientific man lives his life objectively he is reliant on careful foresight and planning बहुत सुंदर भाବରେ एटा गोटे इंट्रोडक्शन मु दबा पे चेष्टा करिछि सो history always remembers winners not losers correct and the right strategy always wins strategy is the fundamental character of scientific man rather than a romantic man this is the reason why history is a series of victories won by scientific man however there are several individuals within one person okay तो philosophical essay रे टिके you know you also need to be little bit of poetic ए भलिया जते क्वेश्चन आसे तो सेही हिसाब रे आपन टिके लिखिया पड़िबो मु टिके यार कंक्लूजन ला देखौजी रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी अछि हाँ कंटेंट देखंतु कि romanticism is a literary artistic movement that began in the late 18th century
romanticism was both a response to the rationality and a product of societal developments. एठी आउ जिंस गुडा लिखा है कि how कि आमे जेतबेले scientific man when a scientific man develop rationalism जेतबेले भी हमरो जे भी winning हो जैसे war हो किबा पर्सनल लाइफ हो किबा कोन से प्रकार डिप्लोमेसी हो सब बेले क्रिटिकली एनालाइज जो माने करंती तांकर सब बेले जीत हे जी यार एक्चुअली मुख्य जिंस तात्पर्य होची सिया नेक्स्ट देखो तो स्टूडेंट्स फिलोसॉफिकल आ गुडे क्वेश्चन कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग ओके किए कहथिले कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन राष्ट्रपति बुझी भाई कोन यार द बेस्ट टाइम टू फिक्स द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग मीनिंग डोंट वेट फॉर द समथिंग बैड टू हैपन बिफोर मेकिंग अ चेंज या अर्थ एया आमे सब बेले कोन भाबू किछि गोटे खराब हेले ही आमे किछि गोटे पदक्षेप नबा जे पर्यंत खराब हेइनी जे पर्यंत किछि भूल हेइनी आमे पदक्षेप नबानी किंतु यार जो कथार अर्थ होची कि किछि खराब हबा पूर्वरो ही हमको स्टेप्स नबाक पड़िबो ता माने प्रिवेंटिव स्टेप्स नबाक पड़िबो सो एबे जदि इंग्रजी अर्थ जदि मु कहिबी कि छातटा जदि कोणा अछि आ राति रे आमे ताको रिपेयर करिबा परिबा तो छातटा को केतेबेले रिपेयर करिबा जेतेबेले सूर्य साइन करूची यार अर्थ होची जेतेबेले आलोक अछि सेतेबेले छातटा को रिपेयर कर ता माने समय थाउ थाउ आमे निजको सुधारि देबा जदि हमर किछि भूल रहउची ताको भी सुधारिबा जदि किछि भूल होबाको जाउची ताको भी आमे सुधारिबा यार मुख्य अर्थ तात्पर्य होची एया या सहित आ कोन स्टूडेंट्स कि the natural tendency in life is to wait for the bottom to fall out before making change to improve our life. We wait for the heart attack, for the spouse to walk out, to be passed over or fired or more, etc., etc. The episode shares areas of your life where you can't afford to wait. If you want to go the game changer status, listen to it and go and fix the roof today. बुझिपाले तो जदि आमे चाहूचे नाही हमर से सब जेंति असुविधा न हो सो हमको कोन करिया पड़ियो हमको साधारणतः जीवाक पड़ियो फिक्स करिया पड़ियो ओके एठी देखो तो ट्रांजिशन लाइन गुडा केमिति दिया जायछि क्वेश्चन फॉर्मेट दिया व्हाई इज द टाइमलेस ऑफ एक्शंस इंपोर्टेंट टू मी त माने अगेन पर्सनलाइज्ड एसरे एटा गुडा बेनिफिट अछि कि आपण निजे पर्सनलाइज करि परिबे कि टू मी दिस कोड इज अबाउट डूइंग थिंग्स इन अ टाइम डिपेंडर इट्स टू इजी टू से दैट आई विल गेट टू दैट लेटर the next thing you know it's raining again then you have to suffer through the leaks and the damages they cause try to remember once the sun is shining again okay so ei bhale apna nije tike personalize bi kari padibe mane nijor evoke ta ko apna dei paribe sete out dekhonto the right way to live life is to prepare yourself for the odds before it knocks on your door the time to repair a roof is when the sun is shining revealing these secrets if we have to savings for our look at how things are interrelated ei jo code ta ka kemti covid-19 pandemic pai will be managed next time jemti covid-19 pandemic no ho sei hisab re amku kon kariya padiyo ki health infrastructure ta ko amku strong kariya padiyo are you getting my point understanding all of you Yes, sir. बुझी पाछुंती rest of the students तो एई जो स्टेटमेंट जो तात्पर्यटा खाली एया नु जे पर्सनल लाइफ रे सब किछि रे गवर्नमेंट को भी आपण कहि पारि कि नेक्स्ट टाइम जेंति पैंडेमिक जेंति हेले भी आमे प्रिपेयर रहिबा हमर जेंति ओडिसा गोटे बेस्ट एग्जांपल आपण देई परिबे एग्जांपल एथरे कि ओडिसा 1900 जेतोले 19 मसिया रे जेतोले सुपर साइक्लोन आस्थिला सब किछि बर्बाद हे गेतला बट आमे धीरे धीरे बहुत कथा किछि सिखे तो आज जेतोले साइक्लोन आसुची हमर डर नाही काहे कि ना आमे ऑलरेडी द बेस्ट टाइम टू repair the roof is when the sun is shining because already ame esu jinso repair करiki रखिचे क्लियर समझते Yes, sir. एई भले आपण लिखि परिबे ए मु देछि हेडिंग वेयर कैन आई अप्लाई दिस इन माय लाइफ पर्सनल लाइफ रे कोडी कोडी जिंस अप्लाई करिवे ट्रांजिशन फेज लिखा हेछि ओके in many aspects of life including personal professional organization the time to act is when the conditions are favorable for example in one's personal life this might mean taking care of health saving money repairing a damaged relationship before it gets worse tamane am nijara health ho nijara mu kahibi relationship ho kima nijara टंका फाइनेंशियल डिसिजंस हो ए सब को जिमती समय खराब हवा पूर्वरु ही आमे ताको ठीक ठाक कर दवा दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग ऑफ द कोड जोटा कि
हमर पूर्व वर्ष यूपीएससी रे पचार थिला हां गोटे ऐसे खाली कहि दउची ब्रीफली डिस्कस कर दउची ए जो जिंसटा व्हेयर इज दैट एटा तुम कहिली आ गोटे कोडा थिला एटा लास्ट ऐसे थिला होते हां एटा को चार नंबर ऐसेटा मु टिके ब्रीफली पढी दउची एटा केते नंबर एटा 5 नंबर एटा 4 नंबर हां इंडिया एट 75 इयर्स एंड बियॉन्ड यार अर्थ होची साधारणतः यू नो कहिबार अर्थ होची कि इन भारत 75 वर्ष कंप्लीट हला स्वाधीनता रे तो ता पई लेखिया पड़ियो ता पई हमको बियॉन्ड रे कोन काम करियो जेमति अमृत महोत्सव आपण प्राइम मिनिस्टर भी कहिले से जिंसटा को भी हमको हाईलाइट करिया पड़ियो फर्स्ट स्टार्टिंग इज विथ अ कोट फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स महात्मा गांधी quote ro apan start kari paribe you can give any other quote also no problem 75 years ago India began its journey with audacity of hope it is trusted its mostly illiterate citizens with the right to vote and the responsibility of building its democracy look at the language born in the flames of religious strife it placed itself to secularism it committed itself to the end of poverty those were some of the elements of our thrice to its destiny how far have we come transition statement you know मु कहबी गोटे थॉट प्रोवोकिंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट born in the flames of religious आमे बहुत रिलीजियस थिले बट आमे कहा पर विश्वास कले कि नाही आमे सेकुलरिज्म होबो ओके तो ए भला स्टार्ट करी के आपण बहुत सारा मु कहबी ट्रांजिशन लाइन अछि जेंति 75 इयर्स अगो ऑन दिस डेट India's you know first prime minister Jawaharlal Nehru made remarks in a string speech on India attaining freedom at the midnight कोन से कहितले जवाहरलाल नेहरू कि the achievement we celebrate today is but a step, an opening opportunity to the greater triumphs and the achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity, accept the challenge of the future? बुझिपाले this was the exact statement by Jawaharlal Nehru जेतोले सीए स्पीच देथिले तो ए स्पीच टा को भी एठी मु कोट करछि तो एभला आपण लिखियो पड़ो टिके ब्रीफली यू नो सो दैट जानि हेबो Now, there have been significant achievements of constitution schemes, guarantees rights, freedom of speech, religion, secular state, implementation of universal adult franchise in periodical elections, thriving legislature, establishment allowing for a form of separation of power, quasi-federal union, and were recognized on a linguistic basis, the building of the institutions, etc., and etc. But there have also been mistakes and failing. एमती तो नुह जे खाली आमे भलो करछे खराब भी बहुत सारा है कोन कि the inability to extreme poverty and marginalization even though this did not came down the drastically since 1947 अर्थ आजि भी आमे जो कहू जे गरीबी हटाओ आजि भी भारत रे से जो गरीब जो हमर जो प्रॉमिस करथिले कि भारत 75 वर्ष पूरा हेगला बट ए पर्यंत गरीबी इराडिकेट हे पाला नाही तो और भी बहुत सारा आपण लिखिया पड़ियो किछि किछि हाइलाइट पॉइंट आपण को कहूची ओके एटा देखंतु एटा जो होप when we complete 100 years of independence about 20% of our population will be senior citizen about 34 crores which was India's total population when we achieved freedom interesting ना कि 100 वर्ष जेतेबेले आमे पूरा करिबा हमर भारतर 20% population सी हेबे सीनियर सिटीजन एई जो 34 कोटी जनसंख्या एटा होची हमर भारतर टोटल पॉपुलेशन थिला जेतोले हमर यू नो आमे जेतोले फ्रीडम पाइथिले we have to serve and care for the population India when it achieve freedom our dependency ratio will undergo a major change and our demographic dividend would have been inverted. As we enter 75th years of independence, India at 75 is a young democracy, aspirational economy, and an aging nation. Isn't it? तो आउरी भी बहुत सारा जिंस अछि फॉर एग्जांपल इट इज अ टाइम टू प्लान मेटिकुलसली टू रेज जीडीपी पर कैपिटा to USD 20,000 over the next 25 years. Any organization, if asked what they want, they will say, give us the best people and some resources. India has a plenty of both. We have both resources as well as people. What can stop us? This is the question we must ask. Look at this personalized way of writing. Okay, this is a question we must ask. Let's come together to make Viksit Bharat, that means developed India, in the next 25 years. All right. आउट देखो आउ टिके लिखा है
कि when we turn 100 we should celebrate two milestones, one of India having become a developed country, the other 100 years of freedom. When I was discussing this mission, I was asked, is it achievable? India needs the goal of JRD Tata, vision of Bikram Sarabhai, then faith of Vivekananda, values of Buddha to become Ram Rajya. Right? Then COVID-19 विषय में ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି health infrastructure केमती ଆମେ ଅଧିକ କରିବା, then ମୁଁ gender equality विषय में ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି specifically, okay? Gender equality को ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, okay? Now conclusion कौन लिखिबा कि India is poised to become the world's most populous country during 2023. The demographic dividend has resulted in an expanded young population, but fertility is now stabilizing. As a result, India has an opportunity for a limited period of time. Okay. Now, it must safeguard the right to health equality, healthcare for all citizens. It must move from a curative approach to health to prevent one. It must embrace, not fear, the role of civil society. It must invest in young people so that they can participate fully in the economy and society. बुझिएला समझते students? How will you write this essay? India at 75 years and beyond. Are you getting the points? सब जिनिस को टच କରିବାକୁ पड़ियो. Yes? अविनाश, स्वागतिका, श्रुति, अमित, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो माने भी अछंती बुझि पाले? ओके, तो ऑलरेडी मॉडल आंसर अछि आपण समस्त पाखरे. मोर आपनकर गोटे ही एडवाइस आपण पाखरे, त प्लीज आपण मॉडल आंसर को प्रॉपर्ली पढंतु, लाइन बाय लाइन टी पढि नियंतु. आपनकर लेखा डेफिनेटली अलगा हबो, बिकॉज़ मु सब बेले कहिछि डू नॉट कॉपी पेस्ट, निजर ओरिजिनल राइटिंग सब बेले मेंटेन करंतु. मु आशा करबी जे एई जो एसे क्लासेस मु जति की करिछि और आगु को जहां भी मु कहिबी जे जहां भी मॉडल आंसर मिलिबो, बिकॉज़ मोर क्लासेस करिवार मुख्य उद्देश्य एया न जे खाली आपन आंसर कहबा, आंसर तो ऑलरेडी मॉडल आंसर अछि, बट केमिति कोन लेखिबा, जो टिप्स गुडा, जो ट्रिक्स गुडा, जो स्मार्ट टैक्टिक्स गुडा, सेगुडा होची मोर उद्देश्य ए क्लास माध्यम रे आपन समस्त सहित शेयर करिया पे. सो स्टूडेंट्स, एबे नेक्स्ट रे भी आई थिंक मु कहिबी जे जहां भी एसे रो किबा फुल लेंथ रो टेस्ट गुडा हबो, जहां भी चालीची सब गुडा रे एटलीस्ट मॉडल आंसर प्रॉपर्ली आपन पढी कि जानतु, गोटे भी मिस करंतुनी. तो एबे आपन को रिवीजन दीटा करिया पड़ियो. गोटे होची नॉर्मल आपन को सिलेबस रो रिवीजन, ता सहित मु आपन को सब बेले सजेस्ट करिवि कि प्लीज आपन को टेस्ट सीरीज रो रिवीजन गुडा करंतु. देखंतु टेस्ट सीरीज गुडा डिजाइन एमिति ही करा हैछि जोडा कि मोस्ट प्रोबेबल हिसाब रे करा हैछि. तो एटलीस्ट जो टेस्ट सीरीज रो क्वेश्चंस गुडा और मॉडल आंसर पढी कि जाइथिबे, सब बेले गोटे मन रे स्ट्राइक थिबे जे ओके ए क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि, ए क्वेश्चन आसले कोन कोन मु पॉइंट लिखिबि, तो सेही जिंसटा आपण आइडिया करि परिबे. ताले आज पय स्टूडेंट्स हम एतिक रखिबा. नेक्स्ट जेतबेले मु आपन सहित मिसिबि नुआ किसी टॉपिक ऊपर मु डिस्कस करिवि. एंड आशा करूची आई थिंक स्टैटिस नेक्स्ट आई थिंक कालिना पहरदिन बते आपनकर अलगा अलगा टीचर कर क्लास अछि, आपण अटेंड करंतु ऑन टाइम. आ एग्जाम भी पाखे आसिलानी, तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक परठू हमर क्लासेस गुडा हम टिके कम करेबा, सो दैट आपण अधिक रो अधिक समय सेल्फ स्टडीज पय देई परिबे. बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल. केबे भी भाबिबेन जे नाइ मु नाही, जेतବେଳେ भी आपन को मन खराब लागुची किबा यू नो जदी मन आपन को यू नो किछि भी जदी आपन को लागुची नाइ मु पारुनी किबा किछि भी जदी डाउट लागुची, फील फ्री टू रीच टू मी. आई एम द बेस्ट पर्सन. जेतବେଳେ भी आपन को चैलेंज लागुची, फ्रस्ट्रेशन लागुची, आई एम द बेस्ट पर्सन. नेवर वरी एंड हैव फेथ, हेइजबो. डोंट वरी. क्लियर समझते?